धम्मानुधम्मपटिपन्थया बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे। Seek the blessings of the triple gems for purposeful, enriching interaction between all of us. हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें हमारी धम्म में प्रगति को रोकती हैं, कुछ बाधा बनती हैं। और अभी एक महत्वपूर्ण विषय जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि संसार के प्रति जो आकर्षण है वो हमारी साधना में बड़ा बाधक बनता है, क्योंकि अनकॉन्शियसली प्रतिक्रिया होती रहती है, राग द्वेष बढ़ते रहते हैं। जैसे हमने देखा कि 60 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे कैसी संभावना है। महासती पठान सुन के और उसके फिर हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरह से निब्बिदा सेंस ऑफ डिसएंचैंटमेंट डेवलप की जाती है, और यथाभूत ज्ञान दर्शन वो हमारा एक मुख्य मार्ग रहा है। उसके मार्ग से यथाभूत ज्ञान दर्शनम से निब्बिदा डेवलप होती है। कल हमने उसके दूसरे एक प्रैक्टिकल आयाम को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, जो उदाहरण दिया था, जो हमारी सबकी कहानी है, वो दुर्योधन के डिलेमा के रूप में, जानामि धम्मम धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। उसको सामान्य भाषा में कहें कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है मुझे सब मालूम है, लेकिन जो धर्मानुकूल है मेरे को उसको करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और जो धर्म के विरुद्ध है उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती। सबसे डिलेमा ऑफ ऑल सीकर्स हु आर ट्राइंग टू मूव इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द flow of the world. The flow of the world is in the materialistic world view, and we want to flow in the opposite direction. तो ये दिक्कत थी, हमेशा आती रहती है। तो अभी तक हम यही चर्चा करते आ रहे हैं कि भाई यथाभूत ज्ञान दर्शनम से हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी। हम समझेंगे कि जो संसार के सेंसरी प्लेजर्स हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, उनके लाभ तो प्रिय तो लगते हैं, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये सब यथाभूत ज्ञान दर्शन समझ में आता है। और फिर हमने देखा कि अभी तक हम जो करते आ रहे हैं कि जो 10 संज्ञाएं भगवान ने गिरिमानंद सूत्र में बताई थी, उनको आधार पे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक नजरिया बदला जाए। वी स्टार्ट लुकिंग एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, व्हिच वी टर्म्ड आल्सो एज अ काइंड ऑफ cognitive training, mindfulness based cognitive training. And we added the word be into it, that is Buddha's mindfulness based cognitive training, not the MBCT of the psychiatrist which is popular now. तो कई हमने संज्ञा की चर्चा भी की, अनिच्च संज्ञा, अनत्त संज्ञा, शुभ संज्ञा, आदिनव संज्ञा, सब लोके अनभिरति संज्ञा, सब संखारेषु अनिच्छा। तो सब प्रयास किया हमने समझने का उनका कहाँ कहाँ पे उपयोग है और किस तरह से हम उनको जीवन में उतार सकते हैं। तो ये सब बात समझने की है। तो अगर दुर्योधन के डिलेमा को इसके साथ जोड़ें तो लगता है कि वो यही कह रहे हैं कि ये सब तो मेरी समझ में आता है, अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में कहें, लेकिन फिर भी वो जीवन में उतर नहीं पाता, मैं कर नहीं पाता हूँ। ये जानते हुए भी कि ये ठीक है, मैं उसे नहीं कर पा रहा हूँ, ये गलत है, मैं उसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ। उसका क्या कारण है? और एक तो कारण यही है कि हमारी अभी इनसाइड जो प्रज्ञा है इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उस भ्रम को काट सकें। दूसरा ये है कि सेंसरी अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है, जैसे कल भी मैंने चर्चा की थी संक्षेप में, कि इमोशन और रीजन, इमोशन और इनसाइट के बीच में एक द्वंद्व बना रहता है। एक इंस्टिंक्ट्स और रीजन के बीच में, कह लीजिए इंस्टिंक्ट्स और प्रज्ञा के बीच में एक द्वंद्व बना रहता है, और उसमें
normally instincts become very powerful because उनका base बहुत लंबा है. Millions of lives we have lived according instinctually, and therefore they have very strong habit pattern. वो strong habit pattern को बदलना संभव है. जैसे कुछ उदाहरण हमने देखे थे कल भी, पहले भी. तो जो उदाहरण हमने खिलौनों का देखा है, उसी के उदाहरण से हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो खिलौनों का आकर्षण था, जैसे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं. तो जैसे हम बड़े हुए तो उन खिलौनों से हमारा आकर्षण कैसे छूट गया. ऐसा तो है नहीं कि हमने जब वी रियलाइज देयर अनरियलिटी एंड देयरफॉर वी स्टार्ट गिव इट अप, ऐसा तो नहीं हुआ ना. तो जब मैंने इस पे काफी रिफ्लेक्शन करने की कोशिश की तो बेसिकली ये हुआ दैट वी गॉट अ मोर रियलिस्टिक टॉय इन ट्यून विद अवर ग्रोन अप मेंटल स्टेट. तो एक छोटी सुख की जगह एक बड़ा सुख, ऐसा कह सकते हैं. और हम देख सकते हैं कि अभी भी हम उन छोटे सुखों को, उन ग्रोन अप टॉयज को नहीं छोड़ पा रहे हैं. अभी भी जैसे हम काम कर रहे हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत मन नहीं है, मुझे मालूम है कि इम्पोर्टेंट है, कमिटमेंट है, करना है, बट फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन डूइंग सम टेक्निकल वर्क फॉर सम टाइम, फॉर फ्यू वीक्स. बीच बीच में थोड़ा उसको करेक्शन करना था अभी कुछ दिन पहले, तो करेक्शन करने में बड़ा कष्ट हो रहा था. वो ये लगता कि देखो मैंने अच्छा खासा बना के दिया और वो एडिटर ने उसकी ऐसी तैसी कर दी. उसके अंदर मैथमेटिक्स का फॉर्मेट चेंज करके इतनी गलतियां हो गई, एंड इट वाज गेटिंग रियली टफ. एंड आई रियलाइज कि जब मैं थक जाता था तो आई वुड जस्ट स्टॉप एंड सी, ओके, लेट मी रिलैक्स एंड so many of the times I would relax in the usual way कि अच्छा चलो मैसेज देख लो, यूट्यूब देख लो, कोई टॉक सुन लो थोड़ी देर के लिए अलंगपुर की, अजान की. तो वो सेंसरी प्लेजर की तरफ भी अट्रैक्शन देखा, नोट किया. एंड इट्स नॉट कि हाउ डू वी रियली, व्हाट इज द बेटर. तो मुझे याद आया वही बात अलंगपुर की रिसेंट टॉक में उन्होंने कहा, इट इज हैपनिंग बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग बेटर. But I don't know, we know now better, and we know that हमने चर्चा कर चुके हैं अपने क्लासेस में भी कि हैप्पीनेस में एक वर्ल्डली हैप्पीनेस है जो which is a authentic acceptable way of happiness for householders, but then there is unworldly happiness, and then there is greater than unworldly happiness. Unworldly happiness क्या है, which is not dependent on this five senses, but depends on mind, which is the one obtained through Samatha dhyana, meditation, through samadhi. And then we have the greatest unworldly happiness when we have got free from greed, hatred and delusion. तो मेरा अपना भी अनुभव रहा है कि जब से मैंने पिछले वर्ष से एक बार फिर समाधि का अभ्यास पुष्ट किया, फिर देखा कि अब अगर दिक्कत इस तरह की होने लगती है that there is a pull from external world because of boredom or anything, I can sit quietly and just have a look at the body and the breath, and within a few minutes the mind calms down and there's a pleasant abiding. And I found जब हम सतीपट वो आनापान सती सुप्ता चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा मैंने काफी इम्प्रेस किया था कि सब काय पटि संवेदी is a very powerful practice. And I maintain it from my own practice. I'm talking of from my own practice that, yeah, it is true. And so if you get bored, if you get tired, rather than rushing to remove that from some other sensory pleasure, you can follow this. Sit down quietly. I have been following it and used it a few times, even recently again, and use it whenever I remember. That, okay, let me sit down quietly, no problem. Have a look at the body and start feeling the breath as it is moving through the body. And within a few minutes, the mind calms down, the body calms down, and there's a pleasant abiding. And you can stay in it for quite some time if you wish to. And I've noticed that since the year or so, or
When I have started getting more established in that, the pull of the senses is easily handleable. I don't have to apply a force and suppress that desire. I have a better thing to do. And I have been avoiding to say it in these strong manners because I didn't have a sutta reference to that. Fortunately, I found a sutta reference just a few days back, just by chance. And there is a sutta, Majjhima Nikaya number 14, called Chula Dukkha Khanda Sutta. I'll read out to you some excerpts from there, very small excerpts. Firstly, which Buddha mentions about himself. And that is enough for us to see. मैं सिर्फ उसका अंग्रेजी अनुवाद ही पढ़ूंगा. Before my awakening, when I was still unawakened but intent on awakening, I too clearly saw with right wisdom that sensual pleasures give little gratification and much suffering and distress, and that they are all the more full of drawbacks. मतलब उसके प्रति क्लैरिटी थी बुद्धि के स्तर पे, समझ के स्तर पे, कि sensual pleasures are not really going to give you a abiding happiness. But then he says further, as long as I did not achieve the rapture and bliss that are apart from sensual pleasures and unskillful qualities, or something even more peaceful than that, I knew that I might still return to the sensual pleasures. But when I truly saw well with correct wisdom that sensuality has little gratification, it brings much suffering and much anguish, the drawback here is greater, which means जो संज्ञाएं थी वो ट्रांसफॉर्म होने लगी, अंडरस्टैंडिंग चेंज होने लगी, दृष्टि बदलने लगी. बट एंड देन देयर इज अ बिग एंड I attained rapture and happiness apart from sensuality and unwholesome phenomena. Then I knew that I would not return to sensuality. And based on that experience, the Buddha is giving us the advice. Even though a noble disciple has clearly seen with right wisdom, so long as they don't achieve the rapture and bliss that are apart from sensual pleasures or remove other things, or something even more peaceful than that, he might still return to sensual pleasures. But when a disciple of the noble ones has truly seen with correct wisdom, first the same thing, sensuality's limitations, and he attains rapture and happiness apart from sensuality and unwholesome phenomena, then he does not return to sensuality. Which means sensory restraint जो हम बात कर रहे हैं, that we have to rise above the sensory pleasures, it's not done by forceful suppression. Of course, first part is understanding their detrimental effects through Yathabhuta Jnana Darshana. And second part is, now I can say it confidently with my own experiences, that we should have an access to pleasant abiding or samatha bhavana, or samadhi or samatha bhavana. And if we have that access, ready access, quick access, then we don't have to put any effort in overcoming the sensory pleasures or changing our habits of that kind. It becomes slowly, of course, the transition will take time because it's a very strongly ingrained habit. But then, as we have tasted the pleasant abiding, calm and quiet awareness of doing nothing, just sitting and observing the body and the breath, slowly that becomes stronger, and this pull of this becomes lesser, and pull of that becomes stronger, and we start moving in that direction. So that's the answer to the Duryodhana's dilemma. Firstly, Sammaditthi, right view. Secondly, as a practical step, it's not absolutely necessary. If a person has a very strong panya, he doesn't need it. We know about so many examples in the suttas where just by listening to a talk, a person got totally transformed. But for normal, common people like us, who are given to sensory pleasures, who are given to the usual frailties of human existence, I find practice of samadhi, samatha bhavana is extremely important.
Of course, we have been saying that it's not important from point of view of development of insight. We can develop insight with very minimal samadhi. That also is true. But certainly a certain modicum of samadhi is absolutely essential if you have to really move by leaps and bounds on the path. Because otherwise, we'll keep on going in the same, caught up in the dilemma of Duryodhana. I know what is right, but I'm not able to do because I don't have a better option. So the creation of a better option, that's why Buddha repeatedly mentions what samadhi as a pleasant abiding, so that the world's weariness of the tiredness of the world, the kind of physical, mental tiredness which we experience due to work, which is not always to our liking or to our taste, but we have to do because being householders, then a modicum of practice of samatha is important. And I can say it from my experience and from the experience of those who practice during those times of Anapanasati Sutta, that if you practice systematically for some Sabbakaya Patisamvedi Asasya Sami Sikkati, Sabbakaya Patisamvedi Asasya Sami Sikkati, then within reasonable time, we would also be just as I have been, you would also be able to come to a state where you can just sit quietly for 2 minutes and you're tuned to that, and within a few minutes the mind is calmed down, body is calmed down, there's a pleasant abiding, and there's energy raised from inside when the mind is pleasant abiding. There's automatically virya arises for doing whatever is the task at hand, according to Sati and Panya. So that's my submission, and we have a reflect on it today during the meditation. Have a look at it, practice it, and see. And if you have any feedback, I'm very happy to learn from that. Thank you very much.